प्रेस कॉन्फरन्साक तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। आमचे भितर आमचे CLPचे लिडर दिगंबरराव कामत आनीक ऑल इंडिया जो इलेक्शन ऑर्गनायझेशन इलेक्शनाचे प्रोग्राम जो अनाउन्स जाल्लो आसा आनी त्या खातीर गोंया खातीर खास प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट केल्ले आसा ते बाब मोहन जोशी, आमचे आदले खासदार, आदले MNC, आदले महाराष्ट्राचे यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट, तशेंच दुसरे जे APRO आसा असिस्टंट प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर बाब तनवीर खान, आनी आमचे पार्टीचे ऑफिस बेरर्स जर आसा आमचे कॅन्डिडेट हांगा हजर आसा। आयज PCCची स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मिटींग कॉल केल्ली आमच्या कॅन्डिडेट आनी बाकीचे फ्रंटल ऑर्गनायझेशनाचे बरोबर, आनी गोंयचे संदर्भाचे आनी ऑर्गनायझेशनाचे वेगळे इश्यूज आमी डिस्कस केले। इश्यूज प्रामुख्यान डिस्कस करता आसतना गोंयचे साबार प्रश्न जे सद्याक चालू आसात आनी खुबशे प्रश्नांक सरकार घाई करता, त्या हाचेर आयज हांगा डिस्कशन जाल्लें आसा। त्या संदर्भात आमचे CLPचे लिडर तुमचे कडेन उलयतलेच। पूण मुख्य मुद्दो आयज जे आसा दोन इम्पॉर्टंट रेजोल्युशन आयज घेतलेले आसात ह्या स्टेट एक्झिक्युटिव्ह PCCच्या मिटिंगेक। प्रामुख्यान पयली म्हणजे PCC एक्झिक्युटिव्ह कमिटीन एक ठराव घेतलेलो आनी जे 10 डिफेक्टर्स जे गेल्ले त्यांच्या विरुद्ध डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन फायल करपाचें एक पयली रेजोल्युशन घेतलेलें। सो आयज आमी स्टेट एक्झिक्युटिव्हाक ब्रीफ केले एक्झॅक्टली त्याचो जो हायकोर्टान वर्डिक्ट दिल्लें आसा त्या हाचेर, तेचेर आयज डिस्कशन जालें आनीक सगळ्या मेंबरांक दिसलें की ही जर ऑर्डर अशीच उरली जाल्यार ती खूब घातक आसा, डेमोक्रेसीक घातक आसा, आमच्या कॉन्स्टिट्युशनाक घातक आसा आनी जे इलेक्शन प्रोसेस आसा ताका घातक आसा आनी ते सगळे पॉलिटिकल पार्टीच्या एक्झिस्टन्साचो प्रश्न आसा। आनीक सगळ्यांनी एकमतान एक ठराव जो आदले AG आनी आमचे लिगल सेलाचे चेअरमॅन बाब ॲडव्होकेट कार्लोस आल्वारेस हाणें प्रपोज केलें की ह्या एका इमिजिएटली आमी चॅलेंज करपाक जाय सुप्रीम कोर्टान वचून, आनीक ताचे संदर्भाचे ठराव आयज एकमतान पास जाल्लो आसा आनी डेफिनेटली येता एक 2 दिसां भितर हेची उरली मुखाली जी दिल्ली सुप्रीम कोर्टात प्रोसेस जो आमी स्टार्ट केल्लो आसा ताका आयज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन ठरावा मार्फत स्ट्रॉंगली प्रपोज केल्लो आसा। दुसरे जे पंचायत इलेक्शना संदर्भात गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशनान जे डिलिमिटेशन ज्यो प्रक्रिया सुरू केल्ली आसा, कारण नवो सरकार 10-12 तारखेक स्थापीत जातलो, तरी आसतना घाई गडबडीन जे डिलिमिटेशन केल्यान जंय खुबश्यो ऑब्जर्वेशन आसात त्यो खुबश्यो चुको आनी डिलिमिटेशन मॅन्युप्युलेट केल्ले आसात आनी तातूंत सगळ्यांक दिसता जरी गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशनाचें नांव आसलें जाल्यार ह्या हितूंत पॉलिटिकल इंटरफरन्स जाला आनी जी सरकार सत्तेर आशिल्लो त्या सत्तेच्या सरकारान दुरुपयोग करून डिलिमिटेशन आपल्या सोयीस्करनुसार केल्ले आसा आनी त्या खातीर एक ठरावा मार्फत आमी गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशनाक डिमांड करतात की हेजो जो एक टायम दिल्लो आसा तो टायम एक्सटेंड करचो, कारण हाका टायम दिल्लो आसता अप टू 2 मार्च, हो सामको टायम खूब कमी आसा आनी त्या खातीर तो टायम एक्सटेंडेड टू 4th। सो हो टायम आनी वाडोवचो, ज्या कारणान सगळ्यो अभ्यास करून जंय खंय चुकी जाल्यात त्यो दुसरे मुखार हाडपाक लोकांक सोयीस्कर जातले। त्याच बरोबर बाकीचे सगळे जे इश्यू आसात ते आमी डिस्कस केल्यात आनी हेचेर जे ऑर्गनायझेशनल इलेक्शन्स जे आयच्यान त्यांनी अनाउन्स केल्लो आसा एंटायर प्रोसेस
ते तुमकां डिटेल सांगतलेच ताचो प्रोग्राम. ताचे पयलीं आमचे CLPचे लिडर बाब दिगंबर कामत जे आयज बसकेक जे वेगळे वेगळे विशय आमी चर्चेन घेतले, डिस्कशन केले, त्या संदर्भान आनी ह्या सरकाराक जो आसा जो खुबश्यो अन्यायकारक काम सद्याक करता, मॅन्युप्युलेशन करतात, सरकाराचो मिसयूज करतात, त्या संदर्भान जे आयज आमचे PCC एक्झिक्युटिव्ह कमिटीक डिस्कस जाल्या तेजेर ते 14 तारखेक गोंयांत वोटींग काबार जालां आनी 10 तारखेक कावंटींग आसा. सो एक 15 तारीख पर्यंत नवें सरकार गोंयांत स्थापन जातलें अशी अपेक्षा आसा. आनी अशा परिस्थितींत गव्हर्मेंट काही डिसिजनां हेस्टिली घेवपाक सोदता, काही प्रोसेस कंप्लीट करपाक सोदता, विच इज टोटली इल्लिगल अशें म्हाका दिसता. फॉर एग्जाम्पल काल म्हज्या कानार पडलें की खंय तरी रिक्रुटमेंट चालू आसा. खरें म्हटल्यार रिक्रुटमेंट्स कॅनॉट बी डन, द कोड ऑफ कंडक्ट इज इन प्रोग्रेस. कोड ऑफ कंडक्ट हो चालू आसा, ताका लागून रिक्रुटमेंट जर कितें करपाचें गेलें दॅट इज एब्सोल्युटली इल्लिगल. आमी ऑलरेडी इलेक्शन कमिशनाच्या नजरेक हाडलां की अशें काही इलेक्शन रिक्रुटमेंट जर चलता जाल्यार तें ताबडतोब बंद करपाक जावचें. चीफ सेक्रेटरीक सांगतलें अशें कितें चलता जाल्यार बंद करचें. दुसरी गजाल आतां कितें जालें पंचायतींनी इलेक्शन. पंचायत इलेक्शन्स इलेक्शन कमिशन जरी कंडक्ट करता, इलेक्शन कमिशनान सुद्दां अलर्ट रावपाक जाय टू सी दॅट ऑल द स्टेक होल्डर्स आर टेकन इन टू कॉन्फिडन्स. स्टेक होल्डर्सांक कॉन्फिडन्साक घेतले शिवाय आपल्याक जाय तशी मनमानी कोणेच करची न्ही. आनी म्हणून आमची स्टेट इलेक्शन कमिशनरा कडेन विनंती आसा की ताणें जर लोकांक टायम माहीत जाय, आतां 4 मार्च पर्यंत दिलो म्हणटा, 4 मार्च पर्यंत समज लोकांक दिसता की 4 मार्च पर्यंत तें जायना आनी माहीत जाय टायम स्टडी करपाक किंवा कितें हें करपाक, जाल्यार तो टायम ताणें तांकां दिवचो. हेस्ट करचें न्ही. ते नवें गव्हर्मेंट फाल्यां येतकीर नव्या गव्हर्मेंटाक मागीर आपल्याक जाय तें डिसिजन घेवपाक गव्हर्मेंट इज फ्री. तिसरी गजाल, आज कालच्यान 4 दीस जाले पेडणे बोवाळ चल्ला. पेडणेचे लोक शेतकरी सगळे रस्त्यार आसात आनी गव्हर्मेंट तें बुलडोज करपाक सोदता. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान ताबडतोब तें बुलडोजींग करपाचें बंद करचें. तांचे डिमांड कितें म्हणटा तें आयकुचें आनी शांततेन ताचेर मार्क काडपाचो प्रयत्न करचो. आज सगळे हिंदुस्थानभर शेतकरी रस्त्यार आसात आनी शेतकऱ्यांक बुलडोज करपाचो प्रयत्न जाता. ही अत्यंत घातक गजाल आसा. आनी म्हणून म्हाका दिसता पेडणेच्या परिसरांत जो आतां शेतकऱ्यांचेर अन्याय जाता तो ताबडतोब सरकारान बंद करून तांचे मागणे कितें आसा ते समजून घेवच्यो. नाजाल्यार नवें गव्हर्मेंट कोण येता तांकां सोंपोवणी, तांकां सोडोवणी. तुमी हेस्ट करून तें बुलडोज करपाचो प्रयत्न करता. ते प्रयत्न तशें केले जाल्यार तेजे परिणाम मागीर बरे जावपाचे ना. कारण लोक सगळे आज सगळे लोक रस्त्यार येतात. म्हाका खूब जाणांनी फोन करून सांगला की सगळे लोक एकठांय जावपाक लागल्यात, सगळे शेतकरी एकठांय जाता आनी तांकां सगळे जाण सपोर्ट करता. अशा वातावरणात सरकारान शांततेन तांचे बरोबर बसून डिस्कस करून चर्चा करून सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न करता. आमी रिक्वेस्ट करतात जो आमचो PRO आसा आदलो खासदार मोहन जोशी हांचे कडेन की ताणें मुखाल्ले ऑर्गनायज तांचो इलेक्शनाचो प्रोसेस लेआउट करचो. कांग्रेस पार्टी के जो संगठन के चुनाव शुरू हो गए हैं उसके बारे में डिजिटल मेंबरशिप के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पंजीकरण 31 मार्च तक पूरा करने का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो प्रोग्राम दिया है, उस माध्यम से आज गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की यहाँ पे एक मीटिंग हुई जिसमें PCC के प्रेसिडेंट, CLP के लीडर, PCC ऑफिस बेरर, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, असेंबली के कैंडिडेट, फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन के चीफ, ये सभी सीनियर नेता इस मीटिंग में थे। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में ये पहला मौका है कि जो कांग्रेस पार्टी डिजिटल मेंबरशिप के माध्यम से कार्यकर्ताओं को ग्रास रूट तक एक संपर्क करने की मुहिम हमने शुरू की है। हमारा जो संविधान है, जो कांग्रेस पार्टी का संविधान है, और पूरे यदि हम भारत की बात करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द ओनली नेशनल कांग्रेस पार्टी कि जो बूथ लेवल से लेके
एआईसीसी के अध्यक्ष पद का चुनाव मेंबरशिप के माध्यम से चुनाव कराती है। बाकी की राजनीतिक पार्टियां के चुनाव कैसे होते हैं आप सबको पता है। और इसी माध्यम से गोवा के लिए एआईसीसी ने हमें यहाँ पे नियुक्त किया है। 31 मार्च तक डिजिटल मेंबरशिप के माध्यम से पूरी मतदाता की सूची तैयार की जाएगी। 31 मार्च ये मेंबरशिप की लास्ट डेट ऑफ है। 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक पूरे गोवा में बूथ लेवल से लेके ब्लॉक से लेके डिस्ट्रिक्ट से लेके जो मेंबर बने हैं उनकी लिस्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के लेवल पे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लेवल पे मतदाताओं की लिस्ट वहां पे रिलीज की जाएगी 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल के बाद हमारे चुनाव का पहला चरण होगा कि बूथ कमेटी प्रेसिडेंट और डेलीगेट के चुनाव। उसके बाद हमारा चुनाव होगा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, डीसीसी डेलीगेट और पीसीसी डेलीगेट। उसके लिए हमने टाइम दिया है 16 अप्रैल से लेके 31 मई तक, मतलब 1.5 महीने के बीच में हमको बूथ कमेटी और ब्लॉक कमेटी का चुनाव करना है। उसके बाद हमारा जो चुनाव की स्पेस होगी और डीसीसी प्रेसिडेंट, डीसीसी वाइस प्रेसिडेंट, डीसीसी ट्रेजरर और कार्यकारिणी। उसके लिए 1 जून से लेके 30 जुलाई तक ये चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। डीसीसी के चुनाव के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण है वो पीसीसी का। पीसीसी प्रेसिडेंट, उनकी कार्यकारिणी और एआईसीसी मेंबर, इनका चुनाव हमें करना है 21 जुलाई 2022 से लेके 20 अगस्त तक। 1 महीने में हमें पूरा गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का यहाँ पे चुनाव करना है। और वो चुनाव होने के बाद हमारी कांग्रेस पार्टी की जो सर्वोच्च पद है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट का चुनाव, वो होगा 21 अगस्त से लेके 20 सितंबर के बीच। इसके बीच में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष का चुनाव होगा। और वो चुनाव होने के बाद कांग्रेस के एआईसीसी के सभी जो मेंबर होते हैं पूरे भारत के, वो उस चुनाव में हिस्सा लेते हैं। और उसके बाद कांग्रेस का एक महाअधिवेशन बुलाया जाएगा जो सितंबर या अक्टूबर के बीच में होगा। और उस अधिवेशन के में कांग्रेस के जो सबसे बड़ी जो हमारी कमेटी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव होगा और कांग्रेस का महाअधिवेशन होगा, जिसमें पीसीसी डेलीगेट, एआईसीसी डेलीगेट सब मिलके ये अंतिम चुनाव का हम पूरा करेंगे। तो ये पूरी चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी करने के लिए गोवा के लिए हम आए हैं। और आज बहुत अच्छी मीटिंग यहाँ पे हुई। हमारे सभी सीनियर नेताओं ने और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक मेंबरशिप ज्यादा से ज्यादा बनाने का यहाँ पे हमें आश्वस्त किया है। और आने वाले पंचायत चुनाव के लिए इस डिजिटल मेंबरशिप के माध्यम से हम मतदाताओं को संपर्क करने के लिए भी एक अच्छी सुविधा होगी। मैंने गोवा के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी नेता, इनको धन्यवाद दिया हूं कि जिन्होंने हाल ही में गोवा की जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, उस चुनाव में उन्होंने पार्टी की जीत के लिए बहुत मेहनत की है। और आने वाले 10 तारीख को गोवा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा विश्वास कार्यकर्ताओं ने आज हमारी इस मीटिंग में दिया है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। सो
आमचे बेजीक इश्यूज आशिल्ले सांगल्यार केस तुमचे जे प्रश्न आसतात तांचे उत्तर कमिटी डिसॉल्व जाल्या कितें केलां थोडे कमिटी डिसॉल्व केल्ले कितें कारण कितें इश्यू नाही थोड्यो कमिट्यो इलेक्शना टायमार ज्यो नाशिल्ल्यो ज्यो फूल फ्लॅज कमिटी नाशिल्ल्यो अशे वेगळे वेगळे इश्यू आशिल्ले त्या खातीर त्यो डिसॉल्व केल्ले आसात त्यो रिकॉन्स्टिट्यूट करपाक कारण आतां मेंबरशीप प्रोसेस स्टार्ट जावपाक जाय आनी थंय आमकां दिसलें की फूल फ्लॅज कमिटी नाशिल्लो थोडे कडेन फक्त ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिल्ले थोडे कडेन ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिल्ले पूण ते इलेक्शना एक्टीव नाशिल्ले सो त्या हेजेर आमचे जे कॅन्डिडेट्स जे आशिल्ले सगळे तेंचे कडेन सगळ्यां कडेन बाकीचे कडेन डिस्कस करून ह्यो इमिजिएटली कारण आमकां पार्टी ऑर्गनायझेशन हें स्ट्रेंथन करपाक जाय आनी आमचे कडेन मनीस कमी आसल्यार कोता येता पूण ते फुल्ली डेडिकेटेड पार्टी बरोबर आसपाक जाय आमचो मुखालो कॅडर आसा तो कॅडर आमी एग्रेसीव कॅडर बिल्ड करपाक सोदता जो फूल 100% पार्टी बरोबर आसतलो आनी त्या खातीर पार्टीची लॉयल्टी पार्टीचें डेडिकेशन हें गरजेचें आसतलें मुखाले सगळे संघटनेक इलेक्शनाक लॉयल्टी दिसोंक ना थोड्या वर्सांनी तुमची एंटी पार्टी एक्टिविटीज आशिल्ल्यो एक्टिव पार्टीचे एक्टिविटी कोणाला आशिल्ल्यो त्या टायमार आमी इमिजिएटली एक्शन घेतल्यात खुबशे जाणांचेर आनी खुबशे जाणांक आमी सस्पेंडूय केल्ले आसा पयलीं जश्यो जश्यो आमकां कंप्लेनी आयिल्ल्या कॅन्डिडेटा कडल्यान आमी त्या हेचेर आमी डिसिजन घेतल्यात आनी डिसिजन घेता आसतना आमी कोणाक फाटीं रावनात जेणे कोण पार्टीच्या विरुद्ध काम केल्लें आसा जेणे कोण पार्टी बरोबर रावल्ले ना तेंचेर आमी एक्शन डेफिनेटली घेतलेलें आसा सेम पेंडिंग कॉन्सिक्वन्स खंयच्याच पार्टीक ह्या फावटी भोवमत मेळचें ना आनी अशे वेळार थंय वेगवेगळे गट आसात ते ह्याक मेळोवपा खातीर पोस्ट पोल एलायन्सा खातीर प्रयत्नरत आसात तर तुमची त्या दृश्टीन कितलें जालो आसा आनी आर यू ओपन फॉर पोस्ट पोल एलायन्स वीथ सम स्मॉलर पार्टीज आमचे CLPचे लिडर ह्या संदर्भात उलयतले पूण आमचो जो हे आसा की कळ आसा जो फिडबॅक आसा गोंयच्या लोकांचो सगळ्यांचो असो क्लियर आसा की ह्या फावटी काँग्रेसी वटच्यान सगळ्यांनी वोटींग केल्लें आसा काँग्रेसी बरोबर रावपाचें लोकांनी ठरयिल्लें आसा आनी खूब एग्रेसिवली वोटींग पॉलरायज जाला काँग्रेसी वटच्यान आनी लोकांनी वोट आपलो स्प्लीट करपाक दिलो ना आमकां खात्री आसा की काँग्रेस पक्ष हो मेजॉरिटी सत्तेर येतलो पूण आमकां हो आख्या गोंयचो लोकांचो सरकार करपाक जाय आनी त्या खातीर आमी अपेक्षा धरतात की बाकीचे जे इतर BJPचे पक्ष आसतले जे कोण कितें जी पोजिशनार ते आसतले आमकां सगळ्यांक एक बरोबर करून आमकां हो सरकार गोंयचो लोकांचो करपाक जाय तर पयलीं फाटीं तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले पळय तशें यू स्टील फील दॅट देर इज अ कोचिंग गोईंग ऑन एज फार एज युअर हू कूड बी इलेक्टेड फ्रॉम युअर दीस फाटल्याच म्हटलेलें पळय कोणाक फोन करीत आसा आनी फोन येता तशें आजुनूय येता BJP कळ्ळ्या की ते गोंयांत जिखपाक शकना आनी हें सारकें तांचें क्लियरली कळटा जेन्ना मुख्यमंत्री हरता जेन्ना 2 डेप्युटी CM हरतात इलेक्शनाक तेन्ना तूं इमॅजीन कर बाकीच्या कॅन्डिडेटाची परिस्थिती कितें आसतली सो गोंयांत सगळे लोकांनी BJPच्या कार्यकर्त्यांक सुद्दां आमी खास धन्यवाद दिल्लो आसा खुबशे कार्यकर्त्यांनी BJPच्या ह्या फावटी काँग्रेसी खातीर काम केल्लें आसा आनी हेजी जाणीव BJPक आसा सो ती जाणीव जाल्ल्यान ते सगळे हतबल जाला आसा कारण पावर BJPंतल्यान जेन्ना हातींतल्यान वयता ते डेस्परेट जाता जशी नुस्तीं पळय उदकांतल्यान भायर काडटकच तडफडटा तशी परिस्थिती आज BJPच्या लिडरान गोंयांत जाल्ली आसा ना पूण आमी पयलें जेन्ना डिफेक्शनाचें कितें पयल्या इश्यूज पयले हाव कॉन्फिडंट यू आर एज अ प्रेसिडेंट ओवर दीस इवन आफ्टर तुमी चर्चीन वचो मॉस्कान वचो टेंपलान वचो न्ही कोण उरपाक जाय ते उरतलो नाल्यार उडकी मारचो आज जें वातावरण पळया गोंयांत तें वातावरण पळयल्यार कोणाक धाडस जातलें पक्ष सोडून वचपाचें अशें म्हाका दिसना आज 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 हांव एक एकल्याचो स्टेटमेंट पळयता बरो रिस्पेक्टेड फादर जाण्टेलो ताणें आज क्लियर सांगलां की लोक सोडपाचे ना लोक सारके चावताळून आसा लोक तांच्या घरा कडेन वचून बसतले न्हिदतले घरा कडेन कोणें कितें डिसिजन घेतलें जाल्यार वीच इज फेर इनफ म्हाका ही इज ट्रायंग टू एस्टाब्लीश अ मॉरेलिटी इन द सोसायटी वी शूड बी एप्रिशिएटेड म्हाका दिसलें खरेंच बरें काय ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग मॉरेलिटी बॅक इन टू द सोसायटी तो म्हणटा खंयचें मॉरल कसली डेमोक्रेसी आमकां बरोबर न्ही ताचें तशें जालें जाल्यार कळटलें मागीर लोकांक पीपल वॉन्ट टू स्टॉप दीस समवेर एक लक्षांत दवर हांव इंटरेक्शन केल्लें यंग डॉक्टर्स चार्टर्ड अकाउंटंट बी दे आर ऑल ऑफ द ओपिनियन दॅट दीस शूड स्टॉप टुडे वर टुमारो दीस शूड स्टॉप
Those who don't agree to stop, we will teach them a lesson. अशी भाषा ते उलयताले सगळे. कसले लेसन तुमकां दिसता करपाचें लोकांक? आता कळटला मरे 10 तारखेक कळटला न्ही. 10 जाणांची परिस्थिती कितें आसा ती 10 तारखेक कळटलें. सर तुमचे दुसरे मोपाचे तुमी सांगले लोक फार्मर्स येतात पण आता काम त्यांचे चालू झाले आता सगळे कित्याचे? मोपा कितें? ते फार्मर्साचे ते रोड हे वायडिंग ना आमचें म्हणणें कितें आतां नवें सरकार येवपाचें आसा 10-12 दिसांनी. तांचे कितें जेन्युइन प्रॉब्लेम्स आसा तुमी ती ब्रश असायड करनाका. अल्टिमेटली शेतकरी हो गोंयचोच न्ही ह्या देशाच्या इकॉनॉमीचो कोणो सामको. शेतकारांचेर अन्याय करपाक जायना. हांव स्पश्ट मत म्हजें. हांव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्डाचो 12 वर्सां चेअरमॅन आशिल्लो. शेतकरी कशे त्रास काडटा आनी कितें करता तें हांवें लागींच्यान पळयलां. आमी शेतकऱ्यां खातीर प्लॅटफॉर्म अवेलेबल करून दिला. त्या काम चालू केले आता काम चालू केलें. तांचे कितें मागणी आसा ते तांकां आयकून घेवन तांकां कॉन्फिडन्सान घे न्ही. तांकां ब्रश असायड करता कितें कोण डेप्टी कलेक्टर स्टेटमेंट करता लँड एक्विजिशन ऑफिसर स्टेटमेंट करता. दिगंबर बाबा इतली बुलडोजिंग जे चल्ला पळय न्ही आतां थोडे दीस नवे सरकार येवपाक इतली बुलडोजिंग करपाची इतली गरज अशें तुमकां दिसता की याच म्हणटा न्ही वाय सो मच हेस्ट. हाजे पयलीं अशेंच जाल्लें. इलेक्शन जाल्लें रिजल्ट जावपाचो आशिल्लो वायल्ड लायफ सँच्युरीज नोटिफाय केल्ल्यो. याद आसा जाल्यार पळया तुमकां याद आसा याद करून दिता. गव्हर्मेंट येवपाचो आहा 2 दिसांनी 2 दीस काय 3 दीस पयलीं वायल्ड लायफ सँच्युरीज नोटिफाय केल्ली अंडर 17K. कित्याक करपाक जाय? गिरीश एके सायडीच्यान गिरीश एके सायडीच्यान बीजेपीन दोन तिनां येता एज फार एज speculations are going on across here. But even in Congress also there are speculations going around. So हांव रिप्लाय दिता. लेट देयर बी एनी स्पेक्युलेशन. आय एम नॉट बॉदर्ड. आनी कितें विचारपाक जाय तुका? हांव सांगलां मरे. चीफ मिनिस्टर इज नॉट माय अल्टिमेट गोल. इफ गॉड वॉन्ट्स आय विल बिकम चीफ मिनिस्टर. गॉड डजंट वॉन्ट आय विल नॉट बिकम. म्हजें जर नशिबां बरयल्लें आसा तुमच्यांनी काडून घेवपाक आतां. तुमी म्हजेर कितलोय प्रोपागंडा कोंत्र केलो तुमी म्हाका डिफीट करपाक शकता असेंब्ली इलेक्शनाक. म्हजें विक्ट्री शुअर आसत जाल्यार तशें न्ही. वाय स्पेक्युलेट? लोकांक जाय तेंच जावपाक जाय लोकशायेन. दिगंबर बाबा लास्ट टाइम पळय तुमकां यू वर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पूण तुमची कितें तरी मिस्टेक जाली आनी तुमी तें हांवें 10 फावटी सांगलें. चिदंबरमान पब्लिकली अपॉलॉजीज मागली लोकां कडेन. There was a delay in taking a decision. We will see that there shall not be any delay in taking any decision. We will not repeat that mistake. I openly सांगलें. I apologize to entire public of Goa. will you require independence or other parties support or तुमचे full सध्या आमकां रिपोर्ट्स मेळटा त्या कोतान काँग्रेस should be able to form its government on its own with Goa Forward Alliance Party. ताच्या भायर कितें जाता जेन्ना ब्रिजा कडेन पावता तेन्ना आमी डिस्कस करता. गिरीश बाबा एक पोस्टल बॅलटांचो एक इश्यू आशिल्लो. आतां जे भायर णवची जे पुलीस केल्ले आसा तांकां थोड्यांचेर थोड्यांचेर प्रेशरायज जाता की तांच्यांनी येवचें गोंयान आनी हें करचें म्हणून आनी तांच्या बदल्यान गोंयांतल्यान कांय पुलिसांक थंय धाडचें अशें म्हणून. आनी म्हणजे थोडे जाण जे आसा म्हणजे सादारण 100-1 जाण ते येवपाक तयार आसा आनी बाकीचे म्हणटा की आमी आमच्या खर्चान कित्याक येवचें आनी 100 जाण जे येवपाक तयार आसा ते म्हणटा आमचो खर्च जाता म्हणटा. हाजेर तुमी कितें सांगता? जेन्ना वोटिंगाचो अधिकार आमी सगळ्यांक दितात तेन्ना ती सरकाराची जबाबदारी आसता की खूब फावटी तो वोट करपाक शकना पूण बॅलट पेपर तेडे पावयतात आनी ह्यो हेजे पयलीं केल्ले आसा. पूण हो सरकार कितें करता सरकार हो सगळें जे वोटींग आसा सरकार भिल्लो आसा सरकाराचे CM भिल्लो आसा आनी त्या खातीर तो आयज CM डेप्युटी CM पयशे ऑफर करतात बॅलट पेपराक. गव्हर्मेंट ऑफिसरांक फोन मारून दबाव हाडटात. बॅलट पेपर हाडटा आनी आपूण वोटींग करतात. हांवें पयर न्यूज वाचलेलो गोंयचो मुख्यमंत्री 1.5 लाख पर्यंत रुपया एक मताक दितो गव्हर्मेंट हेका. म्हणजे परिस्थिती खंय पावयल्या पळय. म्हणजे आमी परत सांगताले गोंयच्या लोकांक हेणें गरीब केले गोंय राज्याक गरीब केले आनी गोंयचो मुख्यमंत्री आमचो आनी हे सगळे मंत्री खूब अफाट पयशे केले. ते पयशे आतां हांगसर भायर काडटा तेचे. लोकांचो विश्वास गेले हेंचेर तांकां दिसता पयशांनी जिखता म्हणून. ते पयशे तेंचे कडेन कितले आसले जाल्यार सुद्दां ते इलेक्शन जिखपाचें. आमी ऑलरेडी मागणी केल्ली आमचे अमरनाथ पणजेकार सुनील कावटेकर हांणी ऑलरेडी लेटरूय दिल्ली आनी सरकारान मागलेलें बी की आमचे जे टीव्ही सगळे भायर गेल्ले आसात तांकां तुमी वोटींग रायट इमिजिएटली प्रोवायड करच्यो. ते सुद्दां तांकां खर्च करपाक दिवचे.
कारण ही सरकाराची ड्युटी केल्यानी ते सो सरकारान तांकां ट्रान्सपोर्ट आनी त्याचो खर्च आसा तो प्रोवायड करचो आनी त्यांचो जो अधिकार आसा वोटिंगाचो तो काढून घेवचो. त्यांचे म्हणणे आसा की आता त्यांच्या घरा बॅलट पेपर्स पाविल्ले आसा आणि तांकां फोर्स करता की तुमी येवन हांगासर ते घालचे म्हणून. एक्चुअली तांचो म्हणजे प्रोसिजर आसा कित्याक की ते बॅलट थंय वताले आनी तांणी कोण कलेक्ट करून ते घेवन येताले. सरकाराक दिसता की आपलो पावर यूज करून ते आपल्या फुड्यान तांकां वोटिंग कर म्हणून तांकां हांगा आपयतात आनी ते बॅलट पेपर घेवन ते आपल्या ऑफिसां आपयतात. कारण तांकां विश्वास ना. कारण गव्हर्मेंट ऑफिसर आनी स्टाफ गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज ह्या सरकाराचेर दुखवलेले आसात आनी बाय वोटिंग जर पळयली जे तेणी कोणाक ऑफिसरा कडेन कॅन्डिडेटा मुखार मिनिस्टरा मुखार वोटिंग केली ना ती वोटिंग सगळ्यांनी चडशी बीजेपीच्या अगेन्स्ट मारल्या आनी चडशी काँग्रेसीक मारल्या. थँक्यू.